Hello, and welcome to my channel. I am Hello and welcome to my channel. I am back, and today I will share some insights from my JEE journey, and I will tell you what mistakes did I make and how I ruined 3 years. I actually not ruined, but what mistakes I made in 3 years. And let me tell you, first 2 years, that means 11th and 12th of my journey was like I didn't know what to do or what to do and where to start from. I didn't know anything about JEE till I got admission in near in a local institute, local coaching center. So let's start. सॉरी आई थिंक आई ऑलरेडी स्टार्टेड बट वॉट एवर. देखो भाई, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठती हूँ बिकॉज इट फील्स लाइक अ वर्क टू मी कि पहले स्क्रिप्ट लिखो और फिर मतलब सोचो, पहले वीडियो के बारे में सोचो, फिर स्क्रिप्ट बनाओ और उस स्क्रिप्ट को पढ़ के तब उसी ऑर्डर में लिखो. It feels like a lot of work to me. So I just open my camera and just yap, and I love doing that. I don't know. Yeah, so I just love doing that, and that is also a reason to start my YouTube channel. Like I was thinking like बहुत पहले से कि I will start a channel, but my mind was like no, not now. And sometimes it was like views आएंगे नहीं आएंगे and everything. So I just kept delaying it, and now that my exams are over and I have plenty of time, I am doing nothing. Actually, I am doing some creative things, like I draw and what I wrote mehendi. This is also one of the. So let's get to the point without wasting any further time. So जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड माई स्कोर वॉज लाइक 97.4%. येस, इट वॉज रियली गुड. एंड सो इट वॉज लाइक आई वॉज क्वाइट श्योर दैट आई विल टेक PCM, okay, because I had zero interest in biology. Like I liked biology, but I didn't want to become a doctor or something. So I opted for engineering, and then I heard this term IIT for the very first time. Let me tell you, for the very first time I knew about IITs and everything. So I thought, yeah, let's do it. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. तो फिर हमने सोचा बाहर जाने का, बट फिर ultimately we decided to take admission in a local institute. So I went to a local institute, और तब जाके पता चला, oh, it is such a big deal, IIT, JEE. So उससे पहले I didn't know anything about JEE. So yes, I went, and the teachers there were the first guide for me. So I did whatever they said, and I just followed them blindly, and I regret it. To be honest, I regret following them blindly, like seriously. So there was this teacher in my institute. I won't take name, obviously. He used to say that maths questions these days are really tough in JEE mains. So if you give time to maths, it will not yield a lot. It is better to give that time to physics and chemistry that you will give to maths, because giving that much time to physics and chemistry will yield more marks to you. So I did score good in maths, but I was not like I have to study maths. No,
मुझे मतलब ऐसा था कि कोई बोल दे कि मैथ्स पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई विल नॉट, या आई वॉज दैट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट. सो ही टोल्ड कि मैथ्स में अगर तुम जितना ध्यान दोगे उतना फोकस तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में करो तो बहुत अच्छा होगा. सो आई कम्प्लीटली लेफ्ट मैथ्स, लाइक रियली मतलब मैंने मैथ्स बहुत कम पढ़ा, बहुत कम. सो आई फोकस ऑन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स. ऑल्सो वो भी मुझसे नहीं हो रहे थे और मैंने कोचिंग लेट से ज्वाइन किया था. आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी ऑफ बिहार. यस. और यहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो मतलब कि उतना अच्छा नहीं हो, उतने अच्छे नहीं होते. आई वेंट टू अ लोकल इंस्टीट्यूट, सो आई कैन एक्सपेक्ट मच. सो यस, आई वेंट टू अ लोकल इंस्टीट्यूट एंड आई डिड नॉट स्टडी मैथ्स फॉर कंप्लीट 11th एंड 12th. उसके बाद मैंने मैथ्स डायरेक्ट बोर्ड्स के लिए पढ़ा एंड आई somehow I scored in 85.2 something percentage in my 12th boards. Oh my god, I just managed to. I could have done better, but maths and that teacher's advice, and that teacher used to advise one more thing, that ऑनलाइन से कुछ फ़ायदा नहीं होता, तुम्हें ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए. लाइक आई जॉइंड द इंस्टीट्यूट a bit late, so I had this much backlog, and that teacher told me that तुम बस अभी regular class करो and I will take the responsibility of your backlogs. And I was so dumb that I trusted that teacher. And in classes also, during lectures, he used to constantly say this, that online से कुछ फ़ायदा नहीं है, you should not study online, you should not study on. like 5-6 महीने मैंने स्टार्टिंग के 5-6 महीने बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा, सिर्फ कोचिंग पर डिपेंडेंट रही. एंड आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स. मैंने खुद से नहीं कंप्लीट करे क्योंकि ऑनलाइन मैं पढ़ नहीं सकती थी, और फिर मैं ऐसे कहाँ से कंप्लीट करती ना बिना ऑनलाइन के. तो आफ्टर 5-6 months आई स्टार्टेड online as well, like in parallel to my coaching regular classes I started online as well. So I ईयर में मैंने ड्रॉप ईयर की प्रेपरेशन की अपने घर से. ऑनलाइन मैंने कोर्स नहीं लिया था, बस मैं यूट्यूब से या फिर कहीं से लेक्चर वगैरह देखकर पढ़ रही थी. एंड आई जॉइंड अ लाइब्रेरी नियर बाय. सो यस, आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी एट 6, then came to eat something, then go. It would have been better अगर मैं बाहर जाती पढ़ने के लिए, या फिर सिर्फ वो दो एडवाइस थे जो मुझे उनकी नहीं सुननी थी. It would have been better. But whatever happens for the good. I believe in that saying. So yes, here I am now. Now with my J means drop year over and everything. And I think अगर मैं बाहर जाती तो I could have done better. But let's not blame anyone. Uh, let's just accept whatever happened. So yes, the one piece of advice that I would give to my um, juniors is that don't just follow anyone blindly. Just see what suits you, what works for you. लाइक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ऑनलाइन से अपना बैकलॉग्स क्लियर कर लूँ, बट मैंने नहीं किया. दैट वाज माय मिस्टेक. When the teacher told me to not study maths, I didn't. That was my mistake. So you have to choose what works for you. Yes. So that's all. And in I will keep you guys updated about my counseling and what colleges am I getting from JOSA and from Comet. Okay, so bye bye, cuties, and love you.